આપ જોઈ રહ્યા છો સ્પાર્ક ટુડે ન્યૂઝ સમાચાર વલસાડથી મળી રહ્યા છે। વલસાડ જિલ્લાના વાપી ડુંગરી ફળિયામાં વહેલી સવારે ભીષણ આગ લાગી છે। 15થી વધુ ગોડાઉન સળગ્યા છે। વલસાડ જિલ્લાના વાપી ડુંગરી ફળિયામાં વહેલી સવારે ભીષણ આગ લાગતાની સાથે જ અફરાતફરી પણ મચી હતી। ઉસ્માનિયા કમ્પાઉન્ડમાં આવેલી 15થી વધુ ભંગારની ગોડાઉનમાં આગ લાગતા જ સમગ્ર વિસ્તારમાં ધુમાડાના ગોટે ગોટા પણ જોવા મળ્યા છે। આગ એટલી વિકરાળ હતી કે તમામ ગોડાઉનમાં રહેલા કેમિકલયુક્ત પદાર્થોને કારણે આગ બેકાબૂ બની ગઈ। આ ઘટનાને પગલે સ્થાનિકોમાં ભયનો માહોલ પણ જોવા મળ્યો છે। રહેઠાણ વિસ્તારમાં ગોડાઉન હોવાને કારણે લોકોના जीव पर तालवे चौंट्या है। नाम रमन भाई जी परमार है। मैं दमंगा इंडस्ट्रियल फायर स्टेशन पे जॉब करता हूँ ऑफिसर तरीके। और मेरे को 3:20 पे डूंगरी फड़िया से एक कलाम करके आदमी है, इनका फोन आया था और यहाँ आग लगे। मैं तुरंत 5 मिनट में गाड़ी भेज दिया था और इसके बाद राधा माधव भी हमारी दूसरी गाड़ी भी भेज दिया। जाके देखा तो आग काबू में आ सके ऐसे नहीं है, तो दूसरी गाड़ी जीआईडीसी में से भी बुला लिया था। और अभी तक हमने नहीं सोचा कि कोई जान हानि हुआ है ऐसा, लेकिन सारा 10 से 12 गोडाउन जल के राख हो गया है। कितनी दमकल की गाड़ी और कहाँ से और क्या? वलसाड़ से गाड़ी है, सरीगाम से गाड़ी है, जीआईडीसी की गाड़ी है, राधा माधव की गाड़ी है, दमंगा इंडस्ट्रियल पार्क की गाड़ी है। सबसे पहले दमंगा इंडस्ट्रियल पार्क, फिर राधा माधव, फिर जीआईडीसी की गाड़ी आई थी। अभी क्या हालत है? अभी सब कंट्रोल में है, सिचुएशन काबू में है हमारा।